अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है रायचान साहब और शहजाद भाई को तो आप जानते ही हैं। तो जी आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, ऑल द वार्स फॉट बाय इंडिया 1947 टू प्रेजेंट। तो जी आज की ये तमाम जितनी भी लड़ाइयाँ हैं ये देखते हैं, फिर एंड पे अपना रिएक्शन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। आज की वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। India has fought a series of wars with her neighboring countries since her independence. Today in this video, we are going to discuss all the wars fought by India in detail. Number 6. Indo-Pakistani War of 1947 to 1948. The Indo-Pakistani War was fought between India and Pakistan over the princely state of Jammu and Kashmir from 1947 to 1948. The result of the war was inconclusive. However, most neutral assessments agree that India was the victor of the war, as it was able to successfully defend about two-thirds of the Kashmir, including Kashmir Valley, Jammu, and Ladakh. The inconclusive result of the war still affects the geopolitics of both countries. Territorial changes. UN ceasefire line of 1949. Later becomes line of control after the Simla Agreement of 1972. Pakistan controls roughly a third of Kashmir, whereas India controls the rest: Kashmir Valley, Jammu, and Ladakh. Casualties and losses. India, 1,100 plus soldiers killed. Pakistan, 6,000 plus soldiers killed. Number 5. Indo-China War of 1962. The Indo-China War was a war between China and India that occurred in 1962. A disputed Himalayan border was the main pretext for war, but other issues play a role. A series of violent border incidents occurred after the 1959 Tibetan uprising, when India had granted asylum to the Dalai Lama. The war ended when China declared a ceasefire on 20 November 1962 and simultaneously announced its withdrawal to its claimed line of actual control. The Indo-China War was also noted for the non-deployment of the Navy or Air Force by either the Chinese or Indian side. Result of the war: Chinese victory. Territorial changes. China captures Aksai Chin. Casualties and losses. India, 3,000 plus soldiers killed. China, 700 plus soldiers killed. Number 4. Indo-Pakistani War of 1965. The 17-day war caused thousands of casualties on both sides and witnessed the largest engagement of armored vehicles and the largest tank battle since World War II. India lost around 540 square kilometers of land, primarily in Rann of Kutch, while Pakistan lost around 1,800 square kilometers. Hostilities between the two countries ended after a United Nations mandated ceasefire was declared. Result: inconclusive. Both sides claim victory. United Nations mandated ceasefire. No permanent boundary change. Casualties and losses. Neutral claims. India, 3,000 plus soldiers killed. 150 plus tanks lost. 60 plus aircraft lost. Pakistan, 3,800 plus soldiers killed. 250 plus tanks lost. 20 aircraft lost. Number 3. India-China military conflict of 1967. Well, it was not a war but a conflict. Conflict location: Nathula and Chola on the border between China and Sikkim. Result: Indian victory. China was pushed back from Sikkim. Casualties and losses. India, 88 soldiers killed. China, 340 soldiers killed. Number 2. Indo-Pakistani War of 1971. During the war, Indian and Pakistani militaries simultaneously clashed on the eastern and western fronts.
The war ended after the Eastern Command of the Pakistan military signed the Instrument of Surrender on 16 December 1971 in Dhaka, marking the formation of East Pakistan as the new nation of Bangladesh. Result: decisive Indian victory. Territorial changes. Eastern Front. Independence of East Pakistan as Bangladesh. Western Front. Indian forces captured around 5,795 square miles of land in the west, but returned it in the 1972 Simla Agreement as a gesture of goodwill. Casualties and losses. India, 3,000 plus soldiers killed. 1 naval ship lost. 45 aircraft lost. Pakistan, 9,000 plus soldiers killed. 90,000 plus soldiers captured. 7 naval ships lost. 75 aircraft lost. Number 1. Cargill War. The Cargill War, also known as the Cargill Conflict, was an armed conflict between India and Pakistan that took place between May and July 1999 in the Cargill district of Kashmir and elsewhere along the line of control. The cause of the war was the infiltration of Pakistani soldiers disguised as Kashmiri militants into positions on the Indian side of the LOC. Result: decisive Indian victory. Casualties and losses. India, 520 plus soldiers killed. Pakistan, 1,000 plus soldiers killed. Thanks for watching. हाँ जी, तो राय चांद खान साहब जो रिजल्ट है वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। रिजल्ट तो नुकसान ही हुआ, लेकिन इससे पहले बात ये करेंगे कि क्यों पंगा लिया जब आपको पता था कि हम इतना कर ही नहीं सकते। नहीं, अब देखें हर जगह पे आप कारगिल की 1971 की बात करें, कारगिल की बात करें। कारगिल की बात है ना, कारगिल की बात मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि कारगिल में जब कारगिल की जंग छिड़ी थी सारा सिस्टम सीधा हो गया था, सिर्फ एक मिस्टेक की वजह से, जो नवाज शरीफ ने वहां पे कुछ नहीं करने दिया। अच्छा, वरना ये मैंने कहा है पहले भी कि ये कश्मीर, ये जो सारा सिस्टम है, सारा रास्ते सीधे थे। अच्छा, आगे चलो। नहीं अच्छा अच्छा, अभी उसमें अभी कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिलहाल अभी ये कारगिल की जंग पे ना मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, है तो पंजाबी में है लेकिन सुन लें। एक ही चांद चढ़ा देता है, एक ही चन्न चढ़ा देता है, सानू ही मगरों ला देता है। सही हो गया। असी तेनू भेद की दसिया, तू ते रौला ही पा देता है। तो बंदा ना पंगे ले ना, ऐसे पता जो है कि आगे से पता नहीं क्या हो जाना है। असल में ना शहजाद भाई पता ही क्या है, आपने भी इतनी स्टडी की 16 ईयर, और मेरी भी कुछ टूटी फूटी है 16 ईयर स्टडी। तो मसला ये है कि यहाँ पे जो बताया जाता है कि पाकिस्तान की बुक्स में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। इस वीडियो में भी जो बताया गया कि 1965 की जो जंग है वो पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि पाकिस्तान क्लेम करता है कि पाकिस्तान ने जीती, और इंडिया क्लेम करता है कि इंडिया ने जीती, ठीक है। लेकिन ये आपसी मतलब अपनी जो फौजदारी है, इनकी बातें हैं और इन्हीं में रहेगी। 1971 की जो बात है वो मतलब बांग्लादेश अलग हो गया, ठीक है, तो वो तो एक ग्रेट विक्ट्री थी। उसके अलावा शिमला एग्रीमेंट की, तो शिमला एग्रीमेंट हुआ तो फिर जो है वो सारा कुछ काफ़ी हद तक सेट हुआ। लेकिन उससे 65 की बात हो गई, बात है वो हमने ना तो सुनी थी कभी और ना कभी पढ़ी थी। वो तो जब हमने ये वीडियोस देखना शुरू किए और दोस्तों ने बताना शुरू किया तो फिर हमें पता चला, और फिर जाके हमने इस पर गौर किया तो फिर पता चला कि हाँ जी ऐसे कुछ हुआ था, और जिसके नतीजे में जो है हमारे पास जो है कश्मीर का कुछ एरिया जो है वो हमारे पास आया और बाकी जो है वो इंडिया के पास रह गया। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी जो कौमें है ना, भाई भाई आपस में लड़ पड़े ना तो एक दूसरे को बड़ी गंदी की तरह ये मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा फलान,
और दूसरी बात ये है हमारे यहाँ पे ये पाया जाता है कि वो फलां हमारा शरीक है। अब शरीक जो लफ्ज़ है उसको गाली बना दी, और शरीक बेसिकली होता है हिस्सेदार, कि वो हमारा हिस्सेदार है, वो फलां में है। जब हम किसी की फौतगी पे जाते हैं, कोई मर गया हो, तो हम जाते हैं यार हम आपके गम में शरीक है, वो कहता है कि अच्छा हाँ बड़ा अच्छा लगा कि आप हमारे हिस्सेदार है, शरीक है। लेकिन अगर वही वर्ड हम बोलें कि जो माँ बोलती हैं कि अपने बच्चों को कि उनके घर नहीं जाना, वो तो हमारे शरीक है, वो तो ऐसे है। अब उसी वर्ड को जब वो हमारे शरीक है वाला आ जाता है ना लफ्ज़, तो लगता है कि जैसे शरीक जो होते हैं वो दुश्मन होते हैं और उनको तो मतलब मार मूर के ना ख़त्म ही कर देने चाहिए। तो ये बात इंडिया और पाकिस्तान में मसाइल थे जो कि अभी भी कुछ ना कुछ चल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे यही कहता आया हूँ कि हमारे जो मसाइल है ना, अगर हम आज से कुछ थोड़े कम कर दें ना, करने शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जो सुपर पावर बने फिरते हैं या कहते हैं कि जी हम सुपर पावर है या हैं, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो भी उनको भी फिक्र पड़ जाए कि यार ये जो कौम है जो इस साइड पे एशिया में रहती है, इससे बच के रहना है, ये कौम बड़ी डेंजरस चीज़ है, इसके साथ पंगा नहीं करना। अब यहाँ पे ये है कि हम जितना भी अमन और सुकून से रहने की कोशिश करें, लेकिन मेरा ख्याल ये कहता है कि कुछ ऐसी पावर्स हैं जो इस खित्ते को अमन और सुकून से नहीं रहने देंगी। वो कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई यहाँ पे बंदे ट्रेन कर दिए, कुछ उधर से ट्रेन कर दिए, फलां मार दो, ये कर दो, फलां में धमाका कर दो, ये तीली लगाने तो ये तीली लगाने वाली बात खत्म नहीं हो सकती। अगर ये खत्म हो जाए ना तीली लगाने वाली बात, तो एकजुट हो जाए, जिसे आजकल लोग एजेंसियों के नाम से जानते हैं, बेसिक यही लोग तीली लगाने वाले होते हैं। और सबसे जो बड़ा एक मसला चल रहा है ना, मैं समझता हूँ कि इस तरह हो जाना चाहिए था कि इंडिया की लैंग्वेज और होती और पाकिस्तान की लैंग्वेज और होती, फिर इतने लड़ाई झगड़े ना होते। और ये लैंग्वेज का सेम होना भी लड़ाइयों और झगड़ों का एक कारण बन रहा है, क्योंकि वहाँ का थोड़ा सा कमेंट दे देना, इधर का हर बंदा समझ जाता है कि वो ये कह रहे हैं। और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कह दी जाती हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और यहाँ बातें कह देने से ही बहुत सारी जंगें शुरू हो जाती हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बहसबाजी शुरू हो जाती है, सोशल मीडिया पे लोग एक दूसरे को पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये बताएं, अभी देखें अभी इंडिया में पिछले दिनों में इन्होंने ऐसा माफिया जोड़ा हुआ था जो मुसलमानों के लिए जो है ना वो जीना आराम किया हुआ है। हलाल गोश्त जो मुसलमान खाते हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी इन्होंने। अभी मैं ये बताया, फिर इन बातों के ऊपर ही तो ये झगड़े हैं। मैं बताता हूँ, झगड़े हैं, अकलियत और अक्सरियत के झगड़े ये शुरू से ही रहे हैं, हर जगह पे ही हैं। अगर आप थोड़ा इधर देखें तो इधर भी हैं, और इधर अकलियत चूँकि कम है तो वो झगड़े इतने मंजरे आम पर नहीं आते। उधर अकलियत मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा तादाद में हैं, तो वहाँ की छोटी सी बात को भी हवा दे दिया जाता है। और कुछ गलतियाँ होती हैं, ये कम इल्मी की बात होती है। अगर मैं इंडिया का मुस्लिम हूँ तो मेरा मजहब मुझे ये कहता है कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ चलेंगे। आप देखें ना, ये कम इल्मी की बात है, वो तो अपनी गवर्नमेंट के साथ चलते हैं ना। कुछ जो झगड़े हैं वो इसी वजह से आए कि आप अपनी गवर्नमेंट के साथ तावन नहीं कर रहे। आप अगर देखें, आपको कोई किसी चेक पोस्ट पे चेक किया जाता है तो आप अपनी तौहीन समझते हैं और आप ऊपर से गालियां देना शुरू कर देते हैं। हमारी पावर आएगी तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। इस तरह के जो कमेंट हैं, इस तरह की जो बातें हैं, ये बातें ही तो वो तीली का काम करती हैं। यही तो बातें हैं जो झगड़े और सारी जंगें शुरू कर देती हैं। तो सोशल मीडिया है, जदीद दौर है, बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, बात इतनी होती नहीं, गैर दानिस्ता तौर पर निकली हुई बात को बार बार रिपीट कर दिखाया जाता है, उसे कैमरे में कैच किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पहले सोचो फिर तोलो फिर बोलो। और ये आज के दौर में इस जो ये मकूला है ना, इसकी बहुत ज़रूरत है कि पहले हमें सोचना चाहिए, फिर तोलना चाहिए कि जो हमने सोचा है क्या उसका वजन है, क्या वो बात पूरी रहेगी, फिर उसको बोल देना चाहिए। यहाँ होता क्या है कि आप बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं और आपको नुकसान उठाना पड़ता है। हाँ जी, तो इसी के साथ वीडियो करते इख्तिताम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं लास्ट पे एक और बात ऐड कर दूँ।
हाँ, हम हमारी लाइट चली जाएगी, इसलिए हम खत्म कर रहे हैं।